So am I correct? कांड 1 चैप्टर 13, चैप्टर के क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्याय 13 और पद श्लोक 15. Is written the slok directly? Yeah, repetition is there. Okay. Abhibhrat aryamadhandam Abhibhrat aryamadhandam Yatavad hagakarishu Yavad dadhara shudratvam Yavad dadhara shudratvam Shapad varsha shatam yamaha Shapad varsha satam yamaha Abhibhradaryamadhandam Yatavad agagarishu Yavad dadhara shuddhatvam Shapad varsha shatam yamaha. So word to word meaning. Repetition, some devotees, sloka. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation, word to word meaning. Abhibhrat, administered. Aryama, Dhandam, punishment. Yatavat, as it is suitable. Agakarishu, and the persons who had committed sins. Yavat, as long as. Dadhara, accepted. Shrudatvam, the tabernacle of Shudra. Shapad, as a result of a curse. Varsha Shatam, or 100 years. Yamaha, Yamaraj. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: as long as Vidura played the part of a Shudra, being cursed by Manduka Muni, Aryama officiated at the post of Yamaraj to punish those who committed sinful acts. Purport: Vidura, born in the womb of a Shudra woman, was forbidden even to be a party of royal heritage along with his brothers Dhritarashtra and Pandu. Then how could he occupy the post of a preacher to instruct such learned kings and Kshatriyas as Dhritarashtra and Maharaj Yudhishthira? The first answer is that even though it is accepted that he was a Shudra by birth, because he renounced the world for spiritual enlightenment by the authority of Sri Maitreya and was thoroughly educated by him in transcendental knowledge, he was quite competent to occupy the post of an Acharya or spiritual preceptor. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu, anyone who is conversant in the transcendental knowledge of the science of Godhead, be he a Brahmana or a Shudra, a householder or a sannyasi, is eligible to become a spiritual master. Even in the ordinary moral codes maintained by Chanakya Pandit, a great politician and moralist, there is no harm in taking lessons from a person who may be by birth less than a Shudra. This is one part of the answer. The other is that Vidura was not actually a Shudra. This is one part of the answer. The other is that Vidura was not a Shudra.
He was to play the part of a so-called Shudra for 100 years, being cursed by Manduka Muni. He was incarnation of Yamaraj, one of the 12 Mahajanas on the level with such exalted personality as Brahma, Narada, Shiva, Kapila, Bhishma, Prahlada, etc. Being a Mahajana is a duty of Yamaraj to preach the cult of devotion to the people of the world, as Narada, Brahma, and other Mahajanas do. But Yamaraja is always busy in his Platonic kingdom, punishing the doers of sinful acts. Yamaraja is deputed by the Lord to a particular planet some hundreds and thousands of miles away from the planet of Earth to take away the corrupt souls after death and convict them in accordance with their respective sinful activities. Thus, Yamaraja has very little time to take leave for his responsible office of punishing the wrongdoers. There are more wrongdoers than righteous men. Therefore, Yamaraja has to do more work than the other demigods who are also the authorized agents of the Supreme Personality of Godhead. But he wanted to preach the glories of the Lord, and therefore, by the will of the Lord, he was cursed by Manduka Muni to come into this world in the incarnation of Vidura and work very hard as a great devotee. Such a devotee is neither a Shudra or a Brahmana. He is transcendental to such divisions of mundane society, just as the personality of God assumes his incarnation as a hog, but is neither a hog nor a Brahma. He is above all mundane creatures. The Lord and his different authorized devotees sometimes have to play the role of many lower creatures to claim the conditioned souls, but both the Lord and his pure devotees are always in the transcendental position. When Yamaraj thus incarnated himself as Vidura, his post was officiated by Aryama, one of the many sons of Kashyapa and Aditi. The Adityas are the sons of Aditi, and there are 12 Adityas. Aryama is one of the 12 Adityas, and therefore it was quite possible for him to take charge of the office of Yamaraj during his 100 years absence in the form of Vidura. The conclusion is that Vidura was never Shudra, but were greater than the purest type of Brahmana. Om Tat Sat, Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shilakya, Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha, Vancha Kalpatarabhyasya Kripasandabhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasri Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not translation. Somebody wants to translate in Hindi? Simultaneously. Yes. Yeah. You have the mic? So Hare Krishna, first of all I would like to say a big welcome who gave to me. As you were saying that 2 days back I was in a very cold place in Bengal where there were tribals. The temperature was about 6 degrees, 7 degrees. And in Chennai, in Tamil Nadu, there is no winter. There are 3 climates, hot, hotter, hottest. सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। 2 दिन पहले मैं एक बहुत ठंडी जगह था, लेकिन मैं चेन्नई से हूँ तो चेन्नई में ठंड पड़ती नहीं है, वहाँ सिर्फ गर्म, उससे गर्म और उससे भी ज़्यादा गर्म पड़ती है। We don't wear sweaters or mufflers or woolen blankets in Tamil Nadu, except Ooty or Kodaikanal. Most of the days we use only normal clothing. So I'm just telling you what I say. And we were told to go to a place called Ayodhya. I was wondering, 22nd of last February, Ayodhya Prana Pratishtha was there. Bhakti Prabhu Swami Maharaj asked me to go to Ayodhya. This one Ayodhya in West Bengal. So हम चेन्नई में गर्म कपड़े ठंड के कपड़े नहीं पहनते हैं और मुझे महाराज ने अयोध्या जाने को कहा, तो अभी मैं अयोध्या. We went to Ayodhya, then Kanai Nadashala, all those places. हमने अयोध्या और कनाई नाडशाला बंगाल में. We went there for going to the tribal schools because wonderful children are there. As we said here, Shudra has mentioned here, these children were not ordinary. They are special because they were all like these 2 girls sitting here. They were chanting Bhagavad Gita slokas, singing Vaishnava bhajans.
वहाँ के बच्चे, जब मैं अयोध्या बनाई नाशाला गया तो वहाँ के बच्चों में प्रचार करने हम गए और वहाँ के बच्चे साधारण नहीं थे, वे वैष्णव भजन गाते थे और भगवद गीता पढ़ते थे। Why this place got Ayodhya? Because when one was time, when Ram, Lakshman and Sita were walking in the forest, they had been to this place. Sita was thirsty. जब इस जगह का नाम अयोध्या यहाँ क्यों पड़ा, क्योंकि जब राम जी वनवास में थे तो राम लक्ष्मण सीता माँ यहाँ आए थे और सीता माँ प्यासी थी। This is near Purulia. Near Purulia. When immediately Ram, imagine, when husband and wife are going for yatra, wife is asking, I'm thirsty. Immediately will go to a shop, buy some drinks, tender coconut, or he may show his QR code and buy some juice and give. But Ram took his bow and arrow, shot at the ground, and wonderful tasty water oozed out like a fountain. अगर ये साधारण जगत में होता तो एक पति अपनी पत्नी की प्यास बुझाने के लिए कोई नारियल पानी लेता और उसका पेमेंट करता, लेकिन श्री राम ने अपने धनुष बाण से एक गड्ढा खोदा और वहाँ से पानी निकला। Even now, water is continuously coming out. Water. आज भी वहाँ पानी निरंतर बहता है। I have got in a bottle with me. Maybe after the class, I will give Prabhu little, and everybody can take as Charnamurta. मैं वहाँ से थोड़ा जल लाया हूँ तो आप सब चरणामृत ले सकते हैं। So now I come here, and I already asked you how are you. How are you? बोल पूछना की जरूरत नहीं है. आप सब कैसे हैं तो वही तो। So much of traffic jam in the afternoons, but now in middle of the traffic jam and crowded people, Lord Gaurangas come here. Next to the bank of Ganga. Yesterday we were in Kanyanadishala, which is also near bank of Ganga. So same Ganga here. You are so fortunate that Ganga tat के पास हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम बहुत लकी हैं कि हम गंगा के पास में महाप्रभु यहाँ विराज रहे हैं और हम धन्य हैं कि हम यहाँ हैं। So when Sukadeva Goswami, he was actually he just left home, like most of the devotees in the temple, full-time devotee. His father was very attached to him. My dear son, please don't go do. He just walked away because he was completely spiritually realized. जब सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ रहे थे तो साधारण पिता की तरह उनके पिता ने भी उन्हें मना किया क्योंकि वह उनसे बहुत ज़्यादा उनसे लगाव था। He had so much knowledge because his father had taught him Bhagwatam when he was in mother's womb, and he was so much filled with knowledge. He wanted to give it to others. जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उनके तब से ही उनके पास बहुत ज्ञान था क्योंकि उनके पिता परम ज्ञाता थे। Then simultaneously there was another personality, Parishit Maharaj. He was cursed to die in 1 week. He was actually waiting to hear the glories of the Lord by a suitable qualified person. दूसरी तरफ परीक्षित महाराज थे जिन्हें श्राप लगा था और वह इंतजार कर रहे थे कि कोई शुद्ध महात्मा उन्हें भागवत सुनाए। Then they both happened to meet, and for 7 days, 7 nights, Sukadeva Maharaj spoke, and Parishit Maharaj was hearing along with many devotees. दोनों एक दूसरे से मिले और 7 दिन 7 रात तक भागवत की कथा हुई और परीक्षित महाराज अन्य भक्तों के साथ वह श्रवण कर रहे थे। The Lord is very, very merciful. As soon as we have a little inclination to know about Him, He somehow or other He arranges the facility so that both the speaker and the hearer get benefited. भगवान परम दयालु हैं। अगर हम थोड़ी सी भी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें श्रवण करना है तो भगवान पूरा व्यवस्था कर देते हैं ताकि श्रोता और वक्ता मिल सके। I am sure most of the devotees sitting here are residing nearby this area. मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं वो आसपास ही रहते हैं। So you might be wondering, so difficult to go to Minto Park and other Mayapur Dham to hear Bhagwatam. So in your mind, you would have prayed to Krishna, and Krishna has answered that prayer. तो आपने कभी ना कभी यह सोचा होगा कि मिंटो पार्क मंदिर या मायापुर बहुत दूर है, लेकिन आपके कृष्ण प्रेम के आसक्ति के कारण प्रभुपाद ने यहाँ इंतजाम कर दिया। Of course, nowadays we have social media, in Zoom lectures we can hear. That's also good. But sitting directly in front of the speaker, in front of all Vaishnavas,
that energy, spiritual potency is more. सोशल मीडिया पर श्रवण करना भी ठीक है, लेकिन एक जगह बैठकर सामने से सुनना बहुत अच्छा है, वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है। That's what Sukadeva Goswami, he didn't tell Parikshit Maharaj, you go and sit in a room, I will give Zoom class. He spoke that eye contact is very important because in sadhus, the eyes are very powerful. When a sadhu, a pure devotee like Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati or Acharya like Maitreya Muni, when they see the devotees face to face, they transmit their energy to them. It's like a bodily massage, from eye it comes. इसी कारण सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सामने से कथा सुनाई, क्योंकि जब कोई साधु महात्मा किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनमें एनर्जी शक्ति का संचार होता है, कृष्ण प्रेम जागृत। That's when Rama Pratishtha also, when that Yogi Raj, he made the beautiful Ram Lalla, eyes was not made, even for the Lord. At the last moment, in 20 minutes, he was given a golden chisel and a golden instrument to carve the eye. And they chanted some mantras and purified it. And when the Lord opened, immediately he was not allowed to see the public. They showed a sheet mirror. जब अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनके नयन नहीं बने थे, तो मूर्तिकार को 20-25 मिनट पहले ही एक स्वर्ण की हथौड़ी दी गई जिससे उन्होंने भगवान राम के नयन उपारे, और जब नयन उनके उपारे गए तब उनके सामने एक शीशा लाया गया और श्री राम ने वह देखा। The Lord was so eager for 500 years to see his dear devotees. And that eagerness, when he opens his eyes, the devotees may get drowned, because we are not qualified as of Ram. So he sees his own form, his own eyes, then the power gets less. Then when the devotees see, they are little satisfied. Otherwise, even now I heard many devotees was crying and yelling after that ceremony. तो जब श्री राम ने अपने नयन खोले तो भगवान इतने उतावले थे सबसे मिलने के लिए, लेकिन उस समय उनका जो वेग है वह सब नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्होंने पहले अपने आप को देखा ताकि उनकी शक्ति थोड़ी संभाली जा सके, उसके बाद सब श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए। Of course, we'll be saying that tomorrow, we don't know, by Lord's mercy, we get a beautiful Vigra also, like Radha Govinda, Prabhupada. The deities are so beautiful. When people come to ISKCON temples, the newcomers are asking, are you changing the deities every day? ISKCON में भगवान के विग्रह इतने सुंदर होते हैं कि जब कोई नए श्रद्धालु भक्त आते हैं तो वह पूछते हैं कि क्या आप रोज विग्रह बदलते हैं? Yesterday he was wearing a blue dress and a blue crown. Today he is wearing a yellow dress and it's completely different he looks, because Krishna is called Alankara Priya. He likes to dress himself. So when people come, they are struck with wonder, because the dear devotees, the pujaris, the matajis who make the ornaments, they do with great devotion. The Lord wears it and he gives every Navanama. Krishna's name is Navayavana. Every day he looks new. वे श्रद्धालु भक्त पूछते हैं कि कल तो भगवान ने दूसरे कलर की ड्रेस पहनी थी, आज दूसरे, तो इसमें क्या होता है कि जो श्रद्धालु माता जी और भक्त हैं वे इतने प्रेम से भगवान के पोशाक का निर्माण करते हैं कि जब भगवान वह पहनते हैं तो वह नित्य नव यौवन नहीं लगते हैं। As I said, Krishna is very beautiful. He is completely transcendental, adhyatmic. We are bhautik. We are eyeing this material body. How can a material eyes see this spiritual form? भगवान आध्यात्मिक हैं और हम जड़ भौतिक हैं, तो हमारे भौतिक दृष्टि से हम भगवान का कैसे दर्शन कर सकते हैं? We may not be qualified to see the transcendental beauty of Krishna. That is the reason the pujaris are covering the Lord with ornaments, flower. They're blocking his beauty, because the real beauty we cannot experience. So they're using this dress and ornaments, flowers, so that his beauty gets reduced to 50%. हम उस लायक नहीं है कि हम भगवान का सौंदर्य का दर्शन कर सकें, इसलिए पुजारियों ने भगवान को अनेक प्रकार के अलंकारों और पोशाकों से ढक देते हैं ताकि हम उसके साथ भगवान का दर्शन कर सकें। In our case, if we don't do alankar, you know what happens. अगर हम श्रृंगार नहीं करें तो आप जान सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी। The Lord is always beautiful every time. भगवान हर समय बहुत सुंदर होते हैं। In Shayana Arati, he looks completely different. In Darshana Arati, he looks completely different.
शयन आरती में अलग दिखते हैं, दर्शन आरती में अलग दिखते Then Vasant Panchami on 14th, he look completely different. हैं, बसंत पंचमी पे अलग दिखेंगे। And Gaur Purnima, when he's celebrating his Anga's appearance day, and Nasimha Chaturthi also, because when in a house, if there are 4 children, one child's birthday, other child also parents have to buy new clothes, otherwise they'll fight. So in ISKCON also, if you have 9 deities, Jagannath, Baldev, Subhadra, Gaunitai, and Lakshmi Narasimha Swami, and we have this Radha Krishna, Lalita Vishaka, all the 9 deities get new dresses. अगर हमारे घर में भी किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसके साथ दूसरे बच्चों के लिए भी नई ड्रेस बनवाते हैं, नहीं तो वे झगड़ते हैं। उसी तरह भगवान के अगर जितने विग्रह हैं उन सबका ही नया ड्रेस बनता है। Not that only on Krishna Janmashtami, only give to Krishna special prasad, other deities. Every deity gets the same quantity, same quality of prasad. ऐसा नहीं होता कि जन्माष्टमी है तो सिर्फ कृष्ण को भोग लगेगा, सभी जितने विग्रह हैं उन सबको ही भोग लगाएगा। Lord is doing all this to engage his devotees. भगवान ऐसा करते हैं ताकि उनके भक्त उसमें पार्ट ले सकें। By participating in the seva, we get a type of happiness which cannot be compared to the service what we do outside. जब हम सेवा में भाग लेते हैं तो वो पूरी तरह अलग होता है कि हम जब कोई भौतिक कार्य करते हैं। One such devotee was Vidura. ऐसे ही एक भक्त थे विदुर महाराज। He was always Krishna conscious. हमेशा कृष्ण भक्ति में स्थित। We become Krishna conscious when we are 16 rounds chanting. That also here and there mind goes. हम जब 16 माला जप करते हैं तभी भी हमारा मन इधर-उधर भागता है। We become Krishna conscious during prasadam. हम जब कृष्ण प्रसाद लेते हैं तब हम कृष्ण भक्ति में स्थित होते हैं। इसमें चिली बहुत है, इसमें सॉल्ट कम है, वेरी कॉन्शियस ऑफ प्रसाद। तो मेरे को ऐसा करना, एक पनीर सब्जी इतना डालना, so much that 15-20 minutes our focus is completely on the प्रसाद। प्रसाद हम लेते हैं पूरी तरह हमारा मन प्रसाद में स्थित होता है कि कम दो ज़्यादा दो। But आजकल that is also going slowly. We have mobile and see some nice Bhagwatam lecture. And we take prasad. Sometimes instead of putting in the mouth, it may go in the eyes also. लेकिन आजकल क्या होता है कि हम मोबाइल देखते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मुंह के बजाय हम आँख को खाना खिला देते हैं। But Vidura or Parishit Maharaj, when he was listening to Bhagwatam, he was sitting straight. Of course, excuse me, all this 60 and above, I am also a senior citizen, 60 years. We had to, but we see, you see the Bhagwatam first painting, all the rishis, they're all sitting straight because the concentration was there. And Prabhupada once said, we don't get, there's a health problem called insomnia, those who don't get sleep. Have anybody experienced that? Sometimes we don't get sleep. But they say if you attend Bhagavatam class, we get nice sleep. इसीलिए विदुर महाराज और परीक्षित महाराज जब भागवत श्रवण करते थे तो एकदम सीधे बैठते थे। तो हमने देखा है अनेक चित्रों में कि जब ऋषि मुनि उनकी अवस्था बहुत होती है लेकिन फिर भी वे एकदम सीधे बैठकर कथा सुनते थे। जब आप सीधे बैठेंगे तो आप नींद की बीमारी से भी बच जाएंगे। But it is not a question of body sitting straight. Body can be like this also. Mind has to be sitting straight. That is more important. लेकिन शरीर से भी ज़्यादा मन को ज़रूरत है सीधे रहने की। Can anyone give example of in the Bhagavatam where Bhagavatam class given and that person was sleeping? कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं क्या जब भागवत सुनाई जा रही थी तो famous relative of a great devotee, बहुत फेमस है Lord Shiva, लॉर्ड शिव। then famous, daily we sing that song every day morning. To whom? Kayadu. She is the wife of Hiranyakashipu. Hiranyakashipu is not interested in Bhagavatam. I am happy that in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, if we give Bhagavatam class, 80% will be Matajis, 20% Prabhus. Here we are 80% Prabhus, 20%. They are more interested. So when Narada Muni was giving Bhagavatam class, and he was very much interested to make that child inside her mother's womb not to become like Hiranyakashipu, want to make him a devotee. So he started Bhagavatam. What happens? She sleeps. जब नारद मुनि कयाधु जी को कथा सुना रहे थे तो वह परीक्षित महाराज प्रहलाद महाराज के वो नारद मुनि चाहते थे कि प्रहलाद महाराज सुने। हम तमिलनाडु में जब कथा करते तो देखते हैं कि वहाँ अधिक माता जी हैं, प्रभु कम है, लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है। Prabhu was given the name of Prahlad before I spoke.
Prahlad is already born. So Prahlad, then Narada Muni is wondering, she is sleeping. Usually, I have seen in ISKCON, when somebody sleeps, don't sleep. No person, sit straight. But Narada Muni was happily giving class because from somewhere the sound was coming. Huh? You know, in a phone call, when you make a phone call, in India what they do? Huh? 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 Ha means one meaning, who means another meaning, oh ho, another meaning in India. जब नारद मुनि कयाधु जी को कथा सुना रहे थे तो उन्हें परवाह नहीं थी कि कयाधु जी लेटी हुई थी क्योंकि उन्हें एक होंकार की ध्वनि आ रही थी. See, Shravanam Kirtan means two way. One who speak, that understands, and if they don't understand, they ask questions. So Prahlad was so happily hearing. When he came out of the mother's womb, he became a wonderful devotee, in spite of all the difficulties. श्रवण कीर्तन दोनों तरफ से किया जाता है. तो जब प्रहलाद महाराज अपने माँ के गर्भ से बाहर आए तो वे एक भक्त बने और वह बहुत प्रसन्न. Vidura also, born to Shudra. विदुर जी भी एक शूद्र के घर जन्मे थे. We might have gone through that Mahabharata, where Pandu was born and Dhritarashtra. Dhritarashtra was born blind, and Vedavyasa had to impregnate a maid servant, and she was very happy. As a result, Vidura was born, but the relatives, they treated Vidura as a low class. जब विदुर महाराज का जन्म हुआ था तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वेदव्यास जी ने उनके जन्म में सहायता की थी, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जो परिवारजन थे वो उन्हें नहीं मानते थे. This is a problem in this material world. Somebody is illiterate, somebody is very poor, somebody is having some handicap problem. The other people will criticize them. They'll put them very low. जड़ जगत में यही दिक्कत है कि यदि कोई अनपढ़ होता है या कोई गरीब होता है तो दूसरे उन्हें निम्न दृष्टि से देखते हैं. Externally we may be different. Internally we have to see the internal qualities. बाह्य रूप से हम सब अलग हो सकते हैं लेकिन भीतर से हम सब एक. It is said in the Shastra that Vaishnava, we should not see external features. Vaishnava Kriya Mudra. वैष्णव को किसी को बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए. Gaurkeshwar Babaji Maharaj, he was wearing an old blanket, sitting near restroom and chanting. And lot of hair, he didn't even comb. But he was one of the greatest Vaishnavas. अगर हम गौरकिशोर बाबा जी को देखेंगे तो वह एक बाथरूम के बाहर बैठकर जप करते थे. उनके बाल भी बहुत बड़े-बड़े थे. Whether somebody is born from a different family or a poor family or Vaishnava, all these are external factors. कोई भले ही गरीब परिवार में जन्म हो लेकिन ये सब बाह्य चर्चा है. So the sons of Dhritarashtra, famous son, what is his name? Dur. Dur ho gaya, Krishna se Dur. He was already always criticizing Vidura. दुर्योधन हमेशा विदुर को निंदा करता. Vaishnava Aparadh. We know Vaishnava Aparadh, but Vishnu was a great Vaishnava and he was putting him down. Who was Vidura? We have seen today. One of the Mahajan. He was Yamaraj himself. He took leave. All of us would like to take leave and go for LTC tour, Dham Yatra. Yamaraj was, Prabhupada was mentioning, he was bored, daily giving punishment. Please, Lord, I want to do some seva. I want to preach. Lord said, don't worry, I'll make an arrangement. You can go for 100 years, go and preach like anything. विदुर महाराज की निंदा हो रही थी लेकिन वह देख सकते हैं कि यमराज का अवतार थे और जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उन्हें प्रचार करना है तो कृष्ण ने उनका व्यवस्था कर दी. Of the 12 Mahajanas, Yamaraj also was a Mahajana. And Mahajana means you have to preach. 12 महाजनों में यमराज भी एक महाजन है और महाजन का अर्थ है कि आपको प्रचार करना है. So Prabhupada said all the devotees in our Hare Krishna movement, ISKCON, they should be preachers. इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि हमारे सारे भक्त को प्रचारक होना चाहिए. How to preach? प्रचार कैसे करें? Before that we have to hear. पहले श्रवण करना होगा. Then follow. फिर उसे उतारना होगा. Then tell others. और फिर बोलना पड़ेगा. That's what Prabhupada did. ऐसा ही प्रभुपाद ने. Calcutta's population is more many crores. 2 crores? Maybe 2-3 crores. जनसंख्या 2-3 करोड़ है. How many became devotees? कितने भक्त हैं उसमें से? So the responsibility of all the little Viduras sitting here to preach. इसलिए हम सब थोड़े विदुरों की यह जिम्मेदारी है कि हम प्रचार करें.
because I always give examples. Vidura was a great preacher, but before preaching, what did he do? He didn't participate in the war because that's a lost arrangement. Duryodhana chastised him, blasphemed him, anything. He just walked away. विदुर जी ने प्रचार के पहले क्या किया, उन्होंने महल से बाहर चले गए. हाँ, वो उन्होंने युद्ध नहीं किया, उनकी निंदा भी की गई, लेकिन वे वहाँ से बाहर चले गए. He may never went to any movie theater or a Himalaya to do some personal sense enjoyment. He went in search for a person who can clear his doubts. उन्होंने कोई इंद्रिय तृप्ति की जगह नहीं गए, वे उनकी खोज में गए जो उनके क्वेश्चंस को क्लियर कर सके. Immediately, when somebody is hankering to get spiritual knowledge, Lord, like Parishad Maharaj, how Sukadeva came, Lord arranged Maitreya Muni to help him. जब भी कोई भगवान से मिलने की या उनके बारे में जानने की इच्छा जाहिर करता है, तो तुरंत भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं. So when Maitreya Muni imparted transcendental knowledge to Vidura, he got initiated. और जब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ज्ञान दिया, तो वे दीक्षित हो गए. He became completely purified. वे बिल्कुल शुद्ध हो गए. Then he couldn't control himself. He wanted to preach. उनके बाद वह अपने आप को संभाल नहीं पाए और प्रचार करने के लिए उतावले हो गए. So when Lord does one activity, he accomplishes many activities. जब भगवान कोई एक कार्य करते हैं, तो उसके द्वारा बहुत सारे कार्य करते हैं. That's the reason Prabhupada mentioned again and again. He when he went to America, he told all the American devotees, "You are all Mahatma." इसलिए प्रभुपाद ने जब अमेरिका गए, तो वहाँ के भक्तों को कहा कि आप सब महात्मा हैं. But they are all having big heads, hippies, eating all nonsense, smoking. Prabhupada said, Mahatma, how to understand that? लेकिन वे तो शराब पीते थे, धूम्रपान करते थे, लंबे बाल थे, हिप्पी थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी. How many of you have seen gold mine? आप में से कितने जनों ने स्वर्ण खदान देखी है? Yesterday we were in a place where all coal mines were there. So like gold mines, it looked like a mud, clay, outside, brown color with dirt. बाहर से कीचड़ जैसा दिखता है. There is one Parvat near Puriyala called Marble Kund. They told me, Prabhu, come let us go to Marble Kund. अरे मैंने सोचा Marble Kund is Rajasthan, Makrana. Prabhu, here also Marble Kund is. कल हम पुरुलिया में स्थान गए थे जहाँ पे मार्बल कुंड है. मुझे लगा था कि राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर भी. There we went, huge stones were there, mountains cut, and they said many of the real marble they cut it off. In some place we found the stone shining white patches here and there. वहाँ बहुत बड़े पत्थर थे. हमने देखा कि थोड़े-थोड़े जगह पर सादे पत्थर थे, चमक रहे. They say when they take the stone to another place, they purify it, they chisel it, clean it, they get the real marble. और जब वे उन्हें साफ करके उन पे हथौड़ी लगाते हैं, तब वहाँ से ही मार्बल निकलता है. Likewise gold also, like diamond, it may be very uncut. But after polishing, we get the real diamond. Similarly, Prabhupada, when he went to America, he saw all these Americans, they are all future devotees. जिस प्रकार एक खदान से साफ करने के बाद सोना या हीरा निकलता है, उसी प्रकार प्रभुपाद भी जानते थे कि इनमें से ही असली भक्त निकलेंगे. So he was gradually helping them, talk to them. He spoke Bhagavatam to them. You were all sitting and seeing me. When Prabhupada gave class with girlfriends and boyfriends, they were sitting like this. Prabhupada tolerated because the sloka and the information was going in the ears. And after hearing, diamond getting polished, they all became great devotees. Some of them were even our spiritual masters. प्रभुपाद हिप्पियों की मदद करते थे, उन्हें श्रवण कराते थे, उन्हें समझाते थे. जब प्रभुपाद बोलते थे, तब जो लड़के लड़की थे उनकी तरफ पीठ करके बैठते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद उन्हें समझाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि यही वो खदान है जहाँ से असली भक्त निकलेंगे. So Chaturvanya Maya system, guna karma, if not janma karma. It is not by janma one is a Brahmana, Vaishya, Shudra. One can become an engineer coming from a carpenter family. One can become a carpenter coming from a doctor family, that we have seen. One can become a software engineer coming from a tribal family also. हम देख सकते हैं शास्त्रों के द्वारा कि कोई जन्म से ही किसी की भक्ति निर्धारित नहीं होती है, भले ही वो छोटे परिवार से आया हो, लेकिन वह भक्त बन सकता है.
So Lord created a situation when a small boy, like Vidya, when a small boy, he was playing with an ant. Children like to play. They won't be quiet. He took a grass, small grass, and the tip of the grass, he was just disturbing some ants. जब विदुर छोटे थे तब एक तिनके से वो चींटियों के साथ खेल रहे थे और चींटियों को चित्र मित्र कर रहे थे. Imagine somebody takes a big iron rod and plays with this. What will happen? आप इमेजिन करें कि कोई एक लोहे की बड़ी तलवार लेकर अगर ऐसा हमारे साथ करे. For the ant, that leaf, that leaf, blade of grass was a big headache. चींटियों के लिए भी वह एक बहुत बड़ा वो तिनका जो था वह एक तलवार के समान ही. Immediately email goes to Yamaraj. तो यमराज के पास खबर पहुंच गई. He has a big department. उनका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है. Of course, all this happens. Because of that, when he became big, there were some soldiers, they were attacking some dacoits. When they were running, these robbers and dacoits went to a sage place where he was meditating. एक बार जब ये चोर और डकैत अटैक कर रहे थे तो वह वहाँ एक साधु के पास पहुँचे जो कि ध्यान में था. That sage was very simple, sadharan, and these soldiers thought, you are the king of the dacoit. Come on, tell me, you are the king. वह साधु एकदम सीधे थे और उन्होंने कहा कि ये राजा के आदमी हैं. Sadhu said, I don't know anything. Real sadhu doesn't know what is right and what is wrong. साधु को पता नहीं था. उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता. So they arrested this sadhu. उन्होंने उसे पकड़ लिया. And they said, king said, punish him. और राजा ने कहा कि उन्हें दंड दो. There was, there 3 rods here, hanging here, like that, a big knife. Sadhu was there, it was almost coming to his head and going back. एक तलवार के नीचे साधु को खड़ा कर दिया गया और ऊपर से तलवार पोल के सर पर लगाने लगे. Usually when you don't do any mistake, if you're punished, you will feel very bad. Anybody experienced? जब आप कोई गलती नहीं करते फिर भी दंड भोगना पड़ता है तो बहुत खराब लगता है. क्या आप में से किसी का अनुभव है ऐसा? I have experienced. What about you? We will not do any mistake. Suddenly somebody will come and shout, you rascal, you nonsense, you're like this. How will you feel? कभी कभी हमारी गलती नहीं होती फिर भी हमें दंड दिया जाता है, निंदा की जाती है, तो आपको कैसा लगता है? Have anybody experienced this? अनुभव किया ऐसा? आप गलती भी नहीं किया फिर भी बोल रहे हैं कि तुम गलती किया. So same thing happened to this person, sadhu. साधु के साथ भी ऐसी. Then what we will think, हमने इतने साल से जप किया, इतना मंगलारती अटेंड किया, इतना प्रसाद खाया, so many things. Why is Lord punishing me? हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैंने इतने सालों से जप किया, भजन किया, लेकिन अब भगवान हमें दंड क्यों दे रहे हैं? Chaitanya Mahaprabhu Sishtastakam, last verse, anybody can recollect? Aslisya Vinastamam Adasanam Marmahatam Karotam. So a devotee must think whether you give me difficulty or not give me difficulty, I will not leave here lotus feet. महाप्रभु शिक्षाशतम के अंत में कहते हैं कि भले ही भगवान हमें कुछ दे या ना दे, हम उनके चरणों में हमेशा रहेंगे. In this life we have not committed mistake. What about last life? इस जन्म में हमने भले ही कोई गलती ना की हो, लेकिन पूर्व जन्मों की क्या पता? What was previous life? पूर्व जन्म में किया हो. So Krishna is not taking, he has another department. तो भगवान अलग इसकी व्यवस्था करते हैं. So because of the previous life's karmas, they are suffering now. हमारे पूर्व कर्मों के कारण ही हम अभी भोग रहे हैं. You have seen sometime in newspaper, there are some very rich people. Suddenly they become pauper. ED officials will raid them, they will put a kapda and go to the court. Yesterday he was a crorepati. अखबारों में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे करोड़पति होते हैं जो अगले दिन ही कंगाल हो जाते हैं. सरकार द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है. But he would have been caught after many years. For many years he would have enjoyed. Then they will ask question, why Krishna is not punishing him immediately? वह ऐसा सोच सकता है कि उसने बहुत अपराध किए, बहुत सालों से धन अर्जित किया है गलत तरीकों से, लेकिन वही वैसे सोच सकते हैं कि भगवान ने तुरंत उसे क्यों नहीं पकड़ा? Because he had that good karma sometime previously. When the good karma vanishes and all the zero, he gets caught. क्योंकि उसके कुछ अच्छे कर्म हो सकते हैं जो उसे बचा रहे थे, अब जब वह शून्य हो गए तब वह पकड़ा गया. Then this rishi was questioning, I did so much tapasya,
Why I got this type of, almost I was dying. He goes to Yamaraj, he questions him. वह साधु इसलिए ये पूछने लगा कि मैंने तो इतनी तपस्या की है तो मुझे इतना दंड क्यों दिया जा रहा है। उसने जब वह उसकी मृत्यु हुई तो यमराज से उसने यह प्रश्न पूछा। You are Dharmaraj, you are perfect person. You should give proper judgment. You have given a wrong judgment here. कि आप तो धर्मराज हो, आपको तो न्याय करना चाहिए था, लेकिन यहाँ गलत न्याय हुआ है। Yamaraj says, wait. थोड़ा wait करो. थोड़ा रुको। Flashback, previous, go back. He sees the file, बहुत फाइल होगा वहाँ. File number 1, file 2, file 3, file 4. आपको पता है, there are 3 things. Before I came to ISKCON, I thought only 2 things are there, Punya and Papa. जब मैं ISKCON में आया उसके पहले मुझे लगा कि सिर्फ 2 चीज़ है, पुण्य एक पाप। Do good things, you will get Punya. Do bad things, get Papa. अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो पाप। But after coming and reading Bhagavad Gita and Bhagwatam, there is one more category called Bhakti. जब भागवत और भगवत गीता पढ़ा तब पता चला कि एक और कैटेगरी है, वो भक्ति है। So Chitragupta has a file, diary. He has 3 columns. Column 1, column 2, column 3. Column 1 is Punya column, Pap column and Bhakti column. चित्रगुप्त के खाते में 3 भाग हैं, एक में पाप, एक में पुण्य, एक में भक्ति। In Punya, there will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, about 1 page. पुण्य में 1 पेज हो सकता है। For these people in this material world. इस जड़ जगत के। Then Pap column, then page 1, page 2, page 3, book 1, book 2, book 3, book 4. It goes line. वही पाप के लिए अनेक खाते भरे जाते हैं। In Bhakti column, somewhere on Sunday feast, he went and took some prasad. During Kirtan, he put his hand down. When in America or Europe, when they did Nagar Sankirtan, one lady, she put both her ears like this. She didn't want to hear Krishna's name. Hey, look, chila rahe. She was closing. वही भक्ति में 1 या 2 लाइन ही होती है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए और वहाँ कीर्तन कर रहे थे तो एक स्त्री थी जिन्होंने अपने कान पर हाथ रख दिए थे, वो प्रभुपाद को सुनना नहीं चाहती थी। No, the devotees. She was an elderly lady and there's devotees doing kirtan. So sometimes devotees are very intelligent. So when they go for Nagar Sankirtan, they carry gulab jamun, rasgulla, or this, what do you call, ISKCON's milk sweet. No, the white made in powder, milk powder. Very famous name, I forgot now. Yeah, so this devotee, when she closed her eyes, he took the sweet and laddu and kept near the mouth. When you see prasad, anybody will open the mouth. तो जब ये माता जी ने अपने कान पर हाथ रखा था तो उनके सामने एक प्रसाद के रूप में एक मिठाई उनके मुंह के सामने आ गई थी। She never wanted to listen to Krishna when Krishna's prasadam, nice ghee smell, elaichi, cardamom, offered to Krishna. She opened the mouth and he popped it, tuck. उन्होंने अपना मुंह खोला वह सुगंध के द्वारा तो उनके मुंह में वो मिठाई दे दी। Then she removed the hands. Then Krishna's name entered his ears. Then she started dancing. So like this, many of us, we would have got some sukriti. We are all sitting here, not simply of accident. Previous lifetime, you would have done some swalpam apisa dharmasya, trayatu mahto bayar. Some seva we would have done. You would have seen a devotee's tilak and smile. Tilak ka matlab hai luck. Dil luck milega. Sometimes I tell people, tilak lagao to lucky ho jayega. उसी प्रकार हमारे पूर्व जन्म के कुछ सुकृत कर्म हैं, उसके कारण ही हम आज यहाँ बैठकर कथा सुन सकते हैं। So Yamaraj said, remember when you were a small child, you were poking an ant. For that you had to suffer. यमराज ने उस साधु को कहा कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुमने एक तिनके से चींटियों को परेशान किया था। But the sadhu was well versed in Vedic literature. Children don't have karma. You know that? Children. यह साधु भी बहुत ज्ञाता था और वह उसने कहा कि बच्चों को तो कर्म नहीं लगते। How can you punish children? तो आप मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? Nowadays children are behaving like as adults. आजकल बच्चे बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। When we were 5 years, we were not doing anything. Now we have 5-year-old child, he knows everything. Everything what is happening in the world. जब हम 5 वर्षीय थे तो हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन आजकल के 5 साल के बच्चों को सब कुछ पता होता है। Thanks to one guru. What is that guru called? Mobile guru. गूगल गुरु के द्वारा। I tell mobile asura. मोबाइल असुर। बहुत जमाने के पहले एक असुरा था बड़ा वाला, रेडियो असुरा। सुना था रेडियो? MW, विविध भारती,
something small, SW1, SW2. एक दो चैनल मोबाइल, इट्स कॉल्ड रेडियो असुरा. बहुत पहले हमारे ज़माने में एक रेडियो असुर हुआ करता था. उसके बाद आया ट्रांजिस्टर असुरा. ट्रांजिस्टर उसके बाद ट्रांजिस्टर आया. वो लेके जा सकते हैं. रेडियो को वी कैन टेक, ट्रांजिस्टर बैटरी डाल के जा सकते हैं. देन केम MP3 असुरा, देन CD असुरा. हर एक असुरा को भगवान ने निकाल दिया. देखो संभाल कर दिया. अभी किसके पास रेडियो है? नोबडी हैज रेडियो. मे बी सम ओल्ड शॉप, एंटिक शॉप. सबका समर हो गया. लेकिन अभी सभी असुर एक मिलजुल के एक छोटे असुर में आ गया, इसमें आ गया, इसके अंदर आ गया. I told Hindi. But this mobile asura also can be made a devotee. लेकिन इस मोबाइल असुर को भी हमें भक्त में बदल सकते हैं. Recently in Bhakti book test in Bombay, after 5 years of great effort, Anand Tirtha and Bhima Prabhu, they have put all Prabhupada's books in an app called Transcend app. You can sit and listen to all Prabhupada's lectures, purport, translation, shloka in 5 to 7 languages. दो भक्तों ने प्रभुपाद की बुक्स को ट्रांसलेट करके इस मोबाइल में डाल दिया है एप्लीकेशन में, उसे आप सुन सकते हैं. So then Vidura realized. He said, because you did this, then this sage got angry and gave a curse. Because you misuse your position, you are a Mahajan, you should become a son of a Shudra. तो ये साधु ने गुस्से में यमराज को श्राप दे दिया कि आपने अपनी उपाधि का गलत प्रयोग किया है, तो आप एक शूद्र के घर जाएंगे. You know Yamaraj was always praying to Krishna. मेरे को preach करना है. So Krishna used this sadhu to curse so that Yamaraj can come down to preach. यमराज कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें प्रचार करना है, तो इसीलिए कृष्ण ने साधु के द्वारा उन्हें उस कार्य में लगाया. But we should not do that. बट हमें ये नहीं करना चाहिए. If we do it, we'll have it. We are not qualified. So if anybody make mistake, don't give sharp. अगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं हैं. अगर कोई गलती करे तो उसे श्राप नहीं दे सकते. You can't tell this sadhu criticized and gave sharp to Yamaraj. I will also give sharp. Prabhu ji, मेरे को ऐसे देख रहे हैं तो मैं कुछ शाप दूंगा. No, we can't do that. साधु के उदाहरण द्वारा हम नहीं कह सकते कि कोई हमारे साथ गलत करे तो उसे हम श्राप देंगे. So because of that, Yamaraj became very happy. They have a standby. Sometime temple president goes to Mayapur Yatra. They make vice president to take care of the temple management. They made Ariyama, you take care of this. You give some rest to Yamaraj. Let him go and go some yatra. तो यमराज बहुत प्रसन्न हुए और जब यमराज अपने लीला में आ रहे थे तो आर्यामा को कार्यभार संभालना पड़ा. So we know that when Vidura came here, he was a wonderful devotee. Vidura Niti, this book called Vidura Niti also. विदुर एक बहुत अच्छे भक्त थे और उनकी नीतियों पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है विदुर नीति. Even Krishna, before going to see Duryodhana, Kaurava, he wanted to go to Vidura's house because Krishna is always hankering to serve his devotees. भगवान हमेशा अपने भक्त से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, इसीलिए वे दुर्योधन और कौरवों से मिलने के पहले विदुर जी के घर गए. Krishna called up Duryodhana, I am coming in so and so date, so and so time, be ready. Sometimes guests also write to us, no? Our mother-in-law will tell, Thursday I will come at 3 o'clock. Immediately wife will tell, go take the car, go to the airport, my mother is coming. And he has to obey, otherwise other day Mahabharata will be there. So, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई पति अपनी पति से कहती है कि जाओ मेरी माँ आ रही है, उन्हें एयरपोर्ट से ले आओ. तो भगवान कृष्ण ने भी विदुर को सूचित कर दिया था. विदुर नहीं, दुर्योधन को सूचित कर दिया था कि मैं इस दिन इतने बजे आऊँगा. And Duryodhana wanted to show off. He had the best servants, best table, dining table, best item. He called up Radharani, everybody in Vrindavan, what Krishna likes, everything perfect, all golden pot, golden spoon. तो दुर्योधन ने भी पूरी व्यवस्था कर दी. उन्होंने वृंदावन से सबको बुला लिया, राधा रानी और सब गोपियों को, और भगवान के लिए स्वर्ण पात्रों में सब कुछ तैयार किया और सब सर्वोच्च व्यवस्था कर दी. Like Guru is coming to this temple, Prabhu what he will do, he will call the secretary. What is a Guru like? Morning breakfast, what he takes, what lunch, then he will tell. Then accordingly. But अगर गुरु महाराज यहाँ आए तो हम भी यही करेंगे
कि फोन करके उनके सेक्रेटरी से पूछेंगे कि गुरु महाराज को क्या पसंद है. So when Krishna goes, that is Duryodhana is waiting there. He's so happy Krishna is coming. Immediately Krishna turns right. तो जब कृष्ण जा रहे थे तो दुर्योधन देख रहा था कि भगवान आ रहे हैं. वह बहुत खुश था, लेकिन भगवान मुड़ गए. Vidura was in a small house. विदुर एक छोटे घर में रहते थे. So he goes there. उनकी तरफ चले गए. Usually Atiti means uninvited guest. अतिथि का मतलब जिन्हें हम बुलाते नहीं हैं. If anybody comes to your house without telling, what you will do? There will be no sugar, no item. Then the wife will tell the son, hey, next house go and bring some ghee, bring some sugar. अगर कोई बिनबुलाया आ जाते हैं और घर में कुछ व्यवस्था नहीं होती है तो माताएं अपने बच्चों को दूसरे घर से लाने को कहती हैं. Ladies are perfect home minister. They know exactly how to adjust. लेडीज सबसे अच्छी होम मिनिस्टर होती है. उन्हें पता होता है कि कैसे क्या करना. So when Krishna came to their house, they were wondering, nothing is there in the house. How we can satisfy? जब भगवान विदुर के घर गए तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें भगवान के लिए. So Krishna says, I have come to see you. भगवान ने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ. We cannot see Krishna. हम भगवान को नहीं देख. You can try your best. प्रभु जी मैंने दर्शनार्थी में कृष्ण को देखा. मैं राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश लाइव में देखा. We cannot see Krishna. हम भगवान को नहीं देख सकते. Then how to understand? Krishna has to see us. भगवान को हमें देखना होगा. If Krishna sees us, we are perfect. अगर भगवान हमें देख लेंगे तो हमारी बात पर. How will Krishna see you? भगवान कैसे देखेंगे? You should be qualified. हमें क्वालिफाई. Like we have Mukesh Ambani sitting in 15th or 18th floor in his apartment in Bombay office. जैसे मुकेश अंबानी अपने बॉम्बे में अपने ऑफिस में बैठता है. कलकत्ता में एक रिलायंस डिजिटल को में सेल्समैन है. सेल्समैन रिलायंस कंपनी का. हाँ मैंने हिंदी बोल दिया आपने. So the salesman says, I want to meet Ambani. I want to meet Ambani. He can be telling, but he can't. जैसे कोलकाता का कोई सेल्समैन हो सकता है, वो बोल सकता है कि मुझे अंबानी से मिलना है, लेकिन वो नहीं मिल सकता. Like in that salesman, if he does perfect job, he increases sales of television. He brings profit to the company. Immediately the senior manager, then the regional head manager, it goes to divisional manager, then it goes to Ambani. अरे ये एक आदमी है रिलीज में इतना अच्छा सेवा कर रहा है, उसको बुलाओ, मैं उसको देखना है. लेकिन अगर वो सेल्समैन या एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करेगा तो उसकी प्रमोशन होते हुए वो बात अंबानी तक पहुंच सकती है और अंबानी कह सकता है कि इसको बुलाओ, मुझे उसे मिलना है. When you go there, watchman will salute you also. You can go inside. जब हम वहाँ जाएंगे तो उनका वॉचमैन भी हमें सैल्यूट करेगा. But if the salesman, without Ambani calling, if he goes there, he will not be allowed. लेकिन अगर वह सेल्समैन अंबानी के परमिशन के बिना वहाँ गया तो उसको घुसने नहीं दिया जाएगा. You know what happened to Sudama? क्या आप जानते हैं सुदामा के साथ क्या हुआ? The watchman didn't allow. वॉचमैन उन्हें अलाउ नहीं किया. When Krishna came, my friend is coming. He ran. His hair was going. His one shoe was there. Chadar was flying. Ran to greet his friend because Sudama was not only a friend, he was a great devotee. जब भगवान को पता चला कि सुदामा आए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए तत्पर हो गए और उनका मुकुट कहीं गिर गया, बाल बिखर गए, उनकी पटका गिर गया, क्योंकि सुदामा सिर्फ एक इनका बहुत बड़ा भक्त था. So when we do service sincerely, purely, it will attract Krishna. Bhakti is a Bhaktavatsala. जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे, सेवा अच्छे से करेंगे, तब भगवान आकर्षित होंगे क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं. One thing Krishna doesn't like is pride. कृष्णा को एक चीज पसंद नहीं है, वो अहंकार. मैंने कर दिया, वो मैंने 16 राउंड कर दिया आज, बस ओवर. हमने अब पहले 16th माला लास्ट हरे महीने से आज मेरा कर्तव्य हो गया. टेक द बीट बैक, पुट इन नाइस नेल, कीप देयर. टुमारो मॉर्निंग आई विल टेक इट बैक. ऐसा कितने जन करते हैं कि जब जैसे ही महामंत्र का लास्ट अक्षर बोलते हैं 16 माला के बाद तो माला उठाकर टांग देते हैं. मेरा ड्यूटी हो गया आज, कल आएगा. बट सपोज आई एम फिनिशिंग माई राउंड्स एट 10:30 मॉर्निंग. टुडे 10:30 to tomorrow 10:30 evening, something happens to me, what will happen? अगर मैंने आज सपोज 10:30 बजे अपना जब कंप्लीट कर लिया, अब कल जब करूँगा तो बीच में अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? Krishna says सततम कीर्तन तोमाम, always chant. भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तन तोमाम, हमेशा मुझे याद कर. When you see Prabhupada's video, have you seen Prabhupada's lips moving like this? जब आपने प्रभुपाद की वीडियो देखी है तो आपने क्या देखा है कि प्रभुपाद के होंठ? How many have you seen? कितने जन देखे हैं? He is not chewing pan, no. प्रभुपाद पान नहीं चबा रहे. I have seen all these drivers, like today morning he came, that fellow's, I thought he's chanting Krishna's name, but he's talking out. But Prabhupada, why is because
when you chant your rounds, the tongue, the teeth, the entire body becomes so much spiritualized. Even finishing rounds, it will be chanting automatically. प्रभुपाद इतना भजन करते थे कि जब के बाद भी उनके जिह्वा से उनके मुंह से भगवान का नाम निकलता था. There's no fan here. If you have fan, if it's the fourth speed, running fast, you switch it off. Will the fan stop immediately? जब पंखे फुल स्पीड पे घूमता है और जब बंद करेंगे तो क्या तुरंत बंद होगा वो घूमते ही रहेगा. So tomorrow 10 and 10:30 like it will be running again start off. So that's what great devotees, they don't give any rest. After finishing chanting, they do Krishna Seva, like you're all family members. You think family is also Krishna's part and parcel. Mame Mamsa Jiva Loka, Jiva Bhuta Sanatana, everyone. The child is a devotee, husband is a devotee, maid servant is a devotee, car driver is a devotee. उसी प्रकार से जब जो शुद्ध भक्त होते हैं वह अपने जप के बाद सेवा करते हैं और सब में भगवान का दर्शन करते हैं, अपने ड्राइवर में, अपने परिवारजनों में, सबको भक्त मान के उनकी सेवा करते हैं. Today they may not be a devotee. Tomorrow they will be a devotee. You would have been a pure devotee and become sannyasi also. आज भी भक्त नहीं है लेकिन कल क्या पता वे भक्त बन जाए. So that means Vidura and all were seeing future. Like Prabhupada, when he told Americans, you become devotee, they became devotee. प्रभुपाद ने सोचा कि ये भक्त बन जाएंगे और ये भक्त बन गए अमेरिकन. Like Guru Jayapatak Maharaj is my Guru Maharaj. I think most of you. How many are disciples of? Yeah. आप में से कितने गुरु महाराज? He gives good, very nice names. So one time he told me, I told Chennai has been changed from Madras to Chennai. मैंने उन्हें एक बार कहा कि मद्रास से चेन्नई में बदल गया है नामकरण. वो बोला बहुत अच्छा है. Mad rush. पहला तो mad rush for sense gratification. Santa ras, this ras, that ras. And Chennai they eat rasam. No, very important. South Indians like rasam very much. Real rasam is Madhuri ras. गुरु महाराज ने कहा कि मैड रस, वो मद्रास का नामकरण ऐसे हो गया मैड रस, और चेन्नई में हम रसम बहुत खाते हैं. तो अभी अच्छा हो गया तो चेन्नई हो गया. क्यों? चैतन्य निताय देश, चेन्नई देश. Chennai, because Chaitanya and Nityananda, they were traveling. And Nityananda traveled to Bengal, Bangladesh, all this area. And South India, Mahaprabhu spent 6 years. Of that, 4 months he spent in Srirangam, Ranganath, where Modi ji also went in 11 days. Ranganath deity was worshipped by Ishwaka family. Rama was worshipping. 4 months Chaitanya Mahaprabhu was staying in Srirangam. He preached to one Brahmin family, Venkata Bhatt. The son became full-time devotee. That son is none other than one of the 6 Goswami, Gopal Bhatt Goswami. जब महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु विचरण कर रहे थे तो नित्यानंद महाप्रभु ने बांग्लादेश और बंगाल इस तरफ प्रचार किया, लेकिन महाप्रभु दक्षिण की तरफ गए. उसमें से 4 महीने उन्होंने श्रीरंगम में बिताए और श्रीरंगम में वेंकट भट्ट को दीक्षित किया और उनके जो आगे वंश में हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, वे हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं. So, we have to always be very careful that you see devotional qualities in everyone, not speak harshly, speak with love and affection. हमें बहुत सावधान होकर सबके गुण देखने चाहिए, किसी से गलत आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, सबसे प्यार से बात करना चाहिए. Like Vidura, Duryodhana was shouting at him, he was keeping calm. जिस तरह दुर्योधन के चिल्लाने पर भी विदुर ने नहीं चिल्लाया और शांत थे. That is the reason Krishna came personally to his house. इसीलिए कृष्ण उनके घर गए. If Krishna wants to personally come and sit on the heart, we should give up all these anarthas. जब भगवान अगर चाहें कि हमारे हृदय में आकर बैठ जाएं, तो हमें ये सब गलत काम छोड़ना होगा. If anybody is giving you instruction, it can come in different way. Angrily, soft. Mataji, आप हर एक को ठीक से बोलना है. Mataji, आप हर एक को ऐसे बोल रहे हैं. Anyway, it will come. Okay. जब हमें कोई उपदेश दे तो भले ही वो गुस्से से दे, लेकिन हमें प्यार से उनसे बात करना होगा. So we have to learn from Vidura all this wonderful quality. Of course, we cannot become like Vidura. At least we can know this should be the attitude. विदुर जी से हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए और ये हमारा आचरण होना चाहिए. A devotee is tested at the time of difficulty. एक भक्त की परीक्षा डिफिकल्टी में होती है. Difficulty. मुसीबत में. When we get difficulty, then you should become Krishna conscious more. Suppose if I walk down the staircase, I trip and fall. What I will tell? Ayo, Amma. जब भक्त मुसीबत में होता है तो उसे अच्छे और वह कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है. Like Bharat Maharaj was thinking of home at the time of difficulty.
dear? भरत महाराज जब Last stage of life. हाँ, जब भरत महाराज अपने जीवन के अंत में थे तब वह कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए. We should always be Krishna consciousness. We should try to be in Krishna consciousness even in difficulties. We saw the examples of Prahlad, Vidura. At time of difficulty, they never complain. Today, Prasadam is little salt. Don't worry. कितना अच्छा है. कल बहुत अच्छा बनाया. That time we didn't glorify. Like example, one husband was always telling his wife, "You don't know how to cook. Your mother has not taught you how to cook." Then she said, "Whenever I cook nicely, you didn't glorify me. When I make mistake, you are scolding me. How is that?" हम अच्छे भक्तों जैसे ध्रुव प्रहलाद महाराज के द्वारा सीख सकते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भावनामृत में कैसे स्थित होना चाहिए मुसीबत में भी. एक पति अपने पत्नी को कहता है कि क्या जब वो खाना अच्छा नहीं बनाती कि तुम्हारी माँ ने क्या खाना बनाना नहीं सिखाया, तो वो पत्नी कहती है कि जब मैं अच्छा बनाती हूँ तब तो नहीं कहते. Next day, she will purposely put more salt. तो जानबूझ के नमक ज़्यादा डालेगी. So as Vaishnavas, as devotees, we should learn how to glorify other devotees. तो हमें दूसरे भक्तों को ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए. In Kali Yuga, there is no Brahmana, no Vaishya, no Kshatriya, not even Shudra. Kalo Shudra Sambhava, most of them are less than Shudra. Shudras were following rules and regulations. कलयुग में ना तो कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है. यहाँ तो शूद्र से भी निम्न है. But by performing devotional service, by chanting Krishna's name, we can get all the good qualities of Brahmana and more good qualities of Brahmana also. We can get Shuddha Sattva. We can become Vaishnavas. भगवान का नाम लेते हुए हमें ब्राह्मण से भी अच्छे गुण आ सकते हैं. शुद्ध सत्व गुण में हम स्थित हो सकते हैं. Prabhupada is telling here, there are more wrongdoers than right doers. प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गलत करने वाले लोग ज़्यादा हैं. एक विलेज है, गांव बोलते हैं गांव. Everybody squint eyes. क्या बोलते हैं? One eye is like this. What do you call in Hindi? When you see them, one eye will be here, one eye. You don't know whom you are seeing. 99% of the village population, everybody is having this type of eyes. एक गांव है जहाँ पर अधिकतर लोग बहंगे हैं, जेनेटिक से टेढ़ा देखते हैं. One person from another village, he has normal eyes, he is going there. दूसरे गांव से एक आदमी है जो ठीक देखता है, वो वहाँ जा रहा था. So these people are telling, this fellow's eyes is not good. तो बहंगे लोग कहते हैं कि इसकी आँख ठीक नहीं है. We are all like that. आप लोग तिलक लगा रहे हैं, शिका डाल रहे हैं, धोती, क्या हो गया आपको? कुछ प्रॉब्लम है? सेम एग्जाम्पल. तो इस तरह जब हम तिलक धोती लगा डालते हैं तो सब कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? So never give up our culture. हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए. And the grahasthas, 90% of grahasthas here show example. Don't catch your children's neck and tell chant Hare Krishna. They will chant like a parrot can be taught Hare Krishna. When a cat catches the neck, it will tell ki ki ki. You should make them understand properly. Example, we should get up early in the morning. We should avoid seeing mobile phone. Then they will follow. Acharan. If you do that, our house also will become Vaikuntha. यहाँ पर अधिकतर भक्त गृहस्थ हैं, तो हमें अपने बच्चों को अपने उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए. उनसे जोर जबरदस्ती कीर्तन नहीं, हरे कृष्णा नहीं करवाना चाहिए. हमें अपने आचरण से उन्हें सिखाना चाहिए. Otherwise, parent. No, parent. What is spelling of parent? अंग्रेजी में? PARENT. मेरा इंग्लिश टीचर मेरे को डिफरेंट स्पेलिंग सिखाया. PAYRENT. पेरेंट. रेंट पेना. If you don't properly take care of children, you have to pay on rent, not money. Problems. School principal phone करेगा, your son is doing like this, because you are not properly trained them. So we have to become real parents. Grahastha means make everyone like Dhruv Maharaj or Prahlad Maharaj in systematic way. मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं देंगे तो हमें पे रेंट मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वृद्धावस्था में. तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बनाने चाहिए. So we should all pray to Vidura to bless all of us so that we also can get little qualities what he has. And he himself is Yamaraja. So Yamaraja himself, we are giving mercy, we will never face Yamaraja. विदुर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने गुण हमें दें और वह खुद यमराज हैं, तो यमराज हमें कभी परेशान नहीं करें. He will tell devotees, you please come to my Yamaloka
I have so much Yamadutas doing no mischief. Please teach them chanting Hare Krishna, so that they all become calm. यमराज हमसे कहेंगे कि कृपया आप यमदूत आएं और मेरे यमदूतों को हरे कृष्णा महामंत्र सिखाएं. You can see all this Leela in the 6th chapter, Ajamila's Leela, where Yamaraj is telling, don't disturb any devotee who is chanting Krishna's name in his tongue. One is wearing Kantimala. You see from far, pay obeisance, Hare Krishna and go off. Don't disturb. हम अजामिल की लीला में देख सकते हैं कि किस तरह यमराज अपने यमदूतों को बोलते हैं कि जिसके गले में कंठी हो, माथे पर तिलक हो, हरे कृष्ण हो मुख में, उन्हें परेशान नहीं करना है. For the next 10,000 years, by the mercy of Mahaprabhu, all the previous Acharyas, Prabhupada, and all the senior Vaishnavas, so much preaching is going on. In Yamaloka, they are not able to find some candidates to bring. People are giving up eating meat, nonsense activities, they are all becoming no sins, no pap. They are getting some rest now. अगले 10,000 सालों में महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा से सब भक्त बन रहे हैं और यमलोक में जाने वाले कम हो गए हैं तो उन्हें आराम मिल रहा है. So they'll all come here, they'll come for Kibajaya, Ishre Kibajaya song. We don't know, there may be some Yamadutas wearing this dress and coming. Narada is here, Shiva is coming. They'll all be participating wonderful. But after 10,000 years, the real Kali Yuga will start. तो यमदूत से यमलोक से यमदूत नारद यहाँ आकर भजन कीर्तन कर सकते हैं हमारे साथ और लेकिन 10,000 साल बाद असली कलयुग शुरू होगा. So we should pray that not to be born in advanced Kali Yuga. Let us make this life as a last life. Purify ourselves, purify others. Let us go Vasudeva Kudumbam together. Why alone? If I have a nice, yesterday they gave me तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह जन्म अंतिम हो और हम घोर कलयुग में नहीं जन्में. They gave me nice rasgulla in that place. It was so tasty. I told another people, you also taste rasgulla. He also tasted. He told another. Likewise, our chanting Mahamantra is so sweeter. Devotion is so beautiful. What happiness we are getting, we want to share with others. जब मैं यहाँ आया तो मुझे रसगुल्ला खिलाया गया. यहाँ नहीं, यहाँ भी देगा. Calcutta is famous for. तो मुझे रसगुल्ला खिलाया गया. वह इतना अच्छा था कि एक दूसरे को हम खिलाने लगे. उसी प्रकार हरि नाम इतना मीठा है कि दूसरों को भी बांटना चाहिए. He is a real Brahman. Brahmana means Uddhar. He gives others. He doesn't keep Kripana. Kripana means myself. वही एक असली ब्राह्मण है. ब्राह्मण मतलब जो दूसरों को बांटता है. So thank you once again for listening attentively. You're all wonderful devotees. And it's nice that if you can help Prabhupada to reach more people. Everybody's phone has at least 2,000 contacts. You'll be surprised. You go and see there, he'll be scrolling A, B, C, D, up to Z it will go. Some more the Gmail and Facebook all will come. Daily talk to 10 people, 10 numbers. आप प्रभुपाद की इस प्रचार कार्य में मदद करें. आप सबके मोबाइल में हजारों नंबर हैं लेकिन सिर्फ 10 लोगों को दिन में आप कॉल करके उनसे बात करें. Don't talk to them. Give up eating meat. Don't take tea, coffee. Nicely, how are you? How are? उन्हें डायरेक्ट ऐसा मत बोलो. Have you taken your morning prasad? Say, make them friends. उन्हें अपने दोस्त बनाएं और डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल दें कि चाय कॉफी बंद कर दो, मीट ईटिंग बंद कर दो, लेकिन उन्हें अपने दोस्त बनाएं और प्यार से. Because nowadays people don't talk. People loud. When somebody asks me how are you, I feel very happy. क्योंकि आजकल व्यक्ति एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं. उन्हें अच्छा लगता है अगर कोई आप हमसे पूछे कि आप कैसे हो. Today is February 11th. Yes. Entire world is celebrating a wonderful day. What is it? Valentine Day. 14th. It is 14th. Before Valentine Day, they have hug day, this day, that day, whatever day is there. But our real Valentine Day is to love Krishna. That's the main thing. 14 फरवरी को सब जब वैलेंटाइन मनाएंगे वैलेंटाइन डे तो हमारे असली वैलेंटाइन भगवान कृष्ण हैं. So please keep loving Krishna. Please keep loving devotees with affection. तो आप कृष्ण और भक्तों से प्यार करते हैं. And Lord will bless all of you. Then you will all be prepared to go back home, back to God in this lifetime. सब गोलोक जाएंगे. हरि बोल. Yeah. You're also fortunate to be near Mayapur. If I want to come to Mayapur, I have to go 2,000 kilometers. You can just catch a bus and go to Mayapur. आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि मायापुर के पास रहते हैं. सिर्फ एक Or go to the Ganga That. One boat is there. Go to Ghat. गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं, घाट जा सकते हैं. Hare Krishna. If any of you have any doubts, sorry for taking more time. किसी का कोई प्रश्न It's Sunday. पूछ सकते हैं.